forever grateful and a lot of gratitude. जिस तरह से बहुत बहुत मुश्किल थोड़ा नीचे अरे नहीं यार प्लीज डिस्टर्ब मत करो यार। बहुत मुश्किल होता है टू टर्न द टाइड ओवर. जी बहुत मुश्किल होता है एक सर्टन वे में अपने आप को आगे ले जाना. और मेरा भी ये ड्रीम था कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूं और अपने टेलीविज़न को रिप्रेजेंट करूं और जो भी मुझसे बेस्ट हो पाएगा वो करूं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके. सो दैट इज़ व्हाट आई डिड. You all know that I was doing the best show on Indian television right now. I would have continued doing that with all my heart, and people loved me to the core. They still miss me. I just got a message from the production team yesterday that your room is still empty. I have not given it to anybody. Would you like to come back? So they really miss me and love me, and I love them back. But वो comfort zone से निकल के कुछ अलग करना, किसी को वो एक स्टेप लेना पड़ेगा. एंड इट्स ओके इफ इट्स मी, एंड इफ द डोर्स ओपन, सर्टन पाथ्स ओपन, एंड दोज लाइन्स आर ब्लर्ड, I will be more than happy. I don't know what is going to happen next. I don't know what will I achieve. But अगर मेरे कुछ करने से वो लाइन्स थोड़ी सी भी ब्लर हो रही हैं, I am forever grateful. you have been a path breaker. You have been a path breaker. और जिस तरीके से आपकी वजह से एक एकता भी हमने देखने मिली है. टेलीविजन और बॉलीवुड दोनों एक साथ आए हैं in your support. I know. I think this is for the first time ऐसा कुछ हुआ है that everybody like ऐसे, everyone was like this, and I did not put out anything because I thought it's not necessary to react, because मेरे लिए my pride, my happiness was more important. That moment was more important. So I was like, let it be. But then how everyone picked it up and it became something else. Only every day I used to get up and I used to see 10 people, 20 people tweeting for me. People I never met, people I don't know, people I have not done anything. I don't even know them. मैंने कुछ उनके लिए अच्छा नहीं किया है, लेकिन फिर भी लोग आगे आए. That shows कि अभी भी हमारी इंडस्ट्री में एकता है. अच्छे काम को आज भी तारीफ मिलती है. So I felt really good, yeah. I think it really motivated me. And then the icing on the cake was, you know that. एक सेकंड. जी. I have thanked everybody, and I will thank them from the bottom of my heart till I am alive for what they've done. I don't know where. I always say मुझे नहीं पता ज़िंदगी, डेस्टिनी, मेरा करियर मुझे कहाँ ले जाएगा, बट जो हुआ उन 4-5 दिनों में वो मैं कभी नहीं भूल सकती. Guys, we'll cut this off right now. Thank you so much. Thank you so much. We're here for the launch. Lovely. It was outstanding. The response was really nice. In fact बहुत सारी और अच्छी चीज़ें हुई जिनके बारे में आपको पता चलेगा. प्रियंका ने आपको जिस तरीके से अपने पार्टी में इनवाइट Nikki, we'll not take this question. Thank you, please. Thank you. It was an answer to many of them, you know, जो टीवी और बॉलीवुड में डिस्क्रिमिनेशन रखते हैं. So what do you want to say on that gesture? I think my post says it all, Nikki. The whole post, the entire 5 paragraph का post जो मैंने किया था, it says it all, that what I feel for that woman and how she treats people. And मैं लिख नहीं पाई उससे ज़्यादा. इंस्टाग्राम में मुझे अलाउ नहीं किया क्योंकि लिखने के लिए मेरे पास और भी बहुत कुछ था. What all she did for me that day and what all she taught me. We spoke a lot, we shared a lot, and I think everything in my life has happened for a reason. And meeting her, there was a reason that how humble people are when they reach there. Where she is, she deserves to be there.